Protests have engulfed Nepal, with key government buildings set ablaze and critical institutions destroyed. The parliament building was the first major target where demonstrators stormed the premises and set the structure on fire. Thick smoke filled the capital city, triggering widespread panic. And following this, the Nepali Army imposed curfews in key areas such as Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur, securing sensitive locations including the Tribhuvan International Airport and the Singhdurbar. Next, the Supreme Court was ransacked by protesters who entered while court officials were still present. They gathered case documents and files, piled them up and set fire to all 3 floors of the building, including the Chief Justice's office and the data center where digital records were stored. The presidential palace also came under attack, with protesters torching parts of the complex, further escalating the crisis. In addition, protesters attacked the Hilton Hotel in Kathmandu, owned by a ruling party leader. Those are the visuals on your screen. You can see what a drastic change that we are looking at right now as far as the famous structures of Nepal is concerned. The crisis has deepened following the resignation of Nepal's Prime Minister, Home Minister and President. Talks between the army chief, Gen Z protest leaders are underway as the country faces its worst political unrest in decades. The business center in Nepal, absolutely gutted, that once stood tall, had to bear the brunt of the Gen Z outpouring on the streets and the protest that erupted, that has shaken Nepal, and the structures have been changed for decades to come. That is the parliament, ladies and gentlemen, absolutely brought down, charred, gutted, defaced. And now, of course, my colleague who has been reporting from ground zero has been reflecting how from rage to responsibility, Nepal's youth who filled the streets with fire and fury yesterday are now back on the same streets, broom in hand and cleaning. Let's take a look at this ground report. नेपाल के इतिहास में कल जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद अब रात 10 बजे सेना ने इस पूरे नेपाल को और काठमांडू को अपने कब्जे में ले लिया है। और हम इस वक्त नेपाल के राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने, जिसे शीतल निवास कहते हैं, वहां पर खड़े हैं। और वहां भी देखिए सेना की तैनाती कर दी गई है। ये वही राष्ट्रपति भवन है जहां पर रामचंद्र पौड्याल रहते थे। और कल यहां पर भीड़ ने जबरदस्ती अंदर घुस के पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। और उसके बाद अब सेना ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। यहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर से सामान लाकर सड़कों पर इस तरह से जलाया गया, सामानों को लूटा गया और पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। अब सेना ने इस पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त सेना बाहर खड़ी है और प्रेस पर्सनल्स के अलावा गेट तक भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अंदर भी सेना काबिज है, बाहर भी सेना काबिज है। सड़कों पर, चौक पर, चौराहों पर, गलियों पर, हर इलाके को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरा कर्फ्यू पूरे नेपाल में लागू कर दिया गया है और बहुत सख्ती से निपटने का संदेश सेना अध्यक्ष के द्वारा दे दिया गया है। अब हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पूरी तरह से सेना यहां पर इन्वॉल्व है। इस तरह के तार लगाए गए हैं कि अगर कोई अब भी जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको आगे किया जाएगा। सिक्योरिटी पर्सनल्स के रूम को जलाया गया। इसके अलावा जो बैरियर्स यहां पर लगे गए थे उसको जलाया गया। और अंदर की आप तस्वीर देखिए, सेना यहां पर सुरक्षा संभाली हुई है। इस तरफ से जरा दिखाइएगा। और ये राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीर है कल जिसको पूरी दुनिया ने देखा। संसद भवन को जलाया गया, हाई कोर्ट की बिल्डिंग को जलाया गया, थाने को, पुलिस को, चौक को, चौराहों को, जो भी सरकारी इमारतें थीं उनको आग के हवाले कर दिया गया। और अब फिलहाल यहां पर सेना काबिज है। Well, that was my colleague getting us the ground report from Nepal, from Kathmandu directly, which witnessed
an uprising like never before. In a decade, this has been the most explosive and a demonstration that was held by Gen Z that seems to have changed the course of Nepal here on, where a government had to decide to step down to cater and yield to the demands of the Gen Z protesters.